Okay, students, so let us look at this question. A fruit seller has a stock of mangoes, bananas, and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, number of mangoes make up 40% of his stock. That day, he sells half of the mangoes, 96 bananas, and 40% of the apples. At the end of the day, he ends up selling 50% of the fruits, smallest possible total number of fruits in stock at the beginning of the days. सबसे पहले तो यार आप देखें यहाँ 40% गिवन है हमें 40% फ्रैक्शन में होता है 2/5 राइट एंड बिकॉज नंबर ऑफ मैंगोज आर 2/5 ऑफ द टोटल सो आई विल एज्यूम टोटल फ्रूट्स टू बी मल्टीपल ऑफ 5 तो टोटल मैंने ले लिया 5x. The number of mangoes are 40% of 5x, so number of mangoes will be 2x. Now see, if mangoes is equal to 2x and total fruits are 5x, that means bananas plus apples, okay, it will be equal to 3x. I hope ये सबको clear. Further it is given he sold 40% of the apples. अब देखें जो apples उसने sell करे हैं वो भी 2/5 है. So I am assuming number of apples to be a multiple of 5. So I'll assume it to be 5y. We know that bananas plus apples it is equal to 3x. So यहाँ से bananas की value आ जाएगी which will be 3x minus 5y. Now he sold half of the mangoes. So half of 2x will be x. He sold 40% of the apples, 40% of 5y, that will be 2y. And bananas he sold is 96. And he sold half of the fruits. So that means x plus 2y plus 96 is half of the total, which is 5x by 2. Now students, let's simplify it. अगर cross multiply करूं मैं, so we'll get twice of x plus 4y plus 192 is equal to 5x, which will give us 3x is equal to 4y plus 192. अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स. मुझे 5x की वैल्यू को यार मिनिमाइज करना है. अब आप खुद सोचिए, अगर 5x को मिनिमाइज करना है दैट मीन्स अल्टीमेटली मुझे x को कम करना है. राइट स्टूडेंट्स, मुझे अब x को कम करना है. अब अगर मुझे x को कम करना है तो y की वैल्यू भी मुझे कम से कम रखनी पड़ेगी. राइट, क्योंकि जितना छोटा ये टोटल होगा, है ना, जितना छोटा ये टोटल होगा उतनी ही छोटी वैल्यू x की आएगी. अब अगर इसको मुझे छोटे से छोटा रखना है तो मुझे y को कम से कम रखना पड़ेगा. नाउ माइंड यू, y has to be minimized, but y cannot be zero, because if y becomes zero, then number of apples will become zero, and that is not possible because it is given in the question at least one fruit of each type. Now if you put y as 1, if you put y as 1, you will get right hand side to be 196. 196 is not a multiple of 3. ठीक है, बात सबको क्लियर है. अगर मैं y को 2 पुट करूंगा, आई विल गेट 200. 3x will be 200. That is not possible. If I put y as 3, I'll get 204, and that is possible. So if I put y is equal to 3, in that case, students, 3x will be 204. That means x will be equal to 68. Now, mind you, we have taken total number of fruits to be 5x. So answer will be 5 into 68, which is 340. So it's a great question. It's a tough one. I hope it is clear to everyone.